So, ladies and gentlemen, the Haryana government certainly has its priorities right. Passport cancellation for protesting farmers and parole pe parole for rapist Ram Rahim. Now, the self-styled godman is supposed to be serving a 20-year jail term. Courtesy the Haryana police, he's serving it outside jail. Ram Rahim is currently out on his 7th parole in 10 months. And it seems the Punjab and Haryana High Court is having no more of it. The High Court has pulled up the Khattar Sarkar over back-to-back paroles and furloughs and has told the government categorically, Ram Rahim does not get any more paroles and furloughs from now on without our permission. Now, for the longest time, the Haryana government's defense in granting Ram Rahim parole is this. They say parole and furloughs are a prisoner's right. To this, the Punjab and Haryana High Court has said, okay. In that case, please tell us how many other prisoners, especially rape convicts, have been given parole and for how long? This is no secret. For the Haryana government, Ram Rahim has always been Kaidi number 1. The rape convict was given a 50-day parole in January this year. In the last 4 years, Rahim has been released 9 times and 7 times in just the last 2 years. The case against Rahim's parole was filed by a Sikh body. Ram Rahim is currently serving a 20-year jail term over the rape of 2 women disciples. And in case you're wondering, there is a pattern behind granting paroles. It usually happens during polls, state or local. Ram Rahim is politically influential in Punjab's Malwa region, which is bordering Haryana. So his paroles essentially are nothing else but a vote bank privilege. A quick chat with my guest this evening. Lokinder Kasna is a supporter of Ram Rahim. He's joining us on the broadcast. Thank you very much. Ranjana Kumari is an activist joining us on the broadcast. And Arvind Kumar Jain is former DGP of Uttar Pradesh. He'll be joining us on the broadcast as well. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you very much for your time here on the network. सबसे पहले तो लोकिंदर जी मैं आपके पास आना चाहूंगी. ये बताइए, आज जो कोर्ट ने बोला, कुछ गलत बोला क्या? लोकिंदर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आइए मैडम, रिपीट द क्वेश्चन. ओके. Yes, I'm going to repeat my question for you, Lokinder ji. आप मुझे बताइए, today the Punjab and Haryana High Court has very categorically called out the parole pe parole that the Haryana government seems to give Mr. Ram Rahim. The court is saying no more paroles and furloughs without our permission. तो अब तो कोर्ट को भी लगने लगा है कि जो हरियाणा की सरकार कर रही है, गलत कर रही है. नहीं, बिल्कुल गलत. हरियाणा की सरकार बिल्कुल गलत नहीं कर रही. जो कानून में है, कानून के तहत वो बाहर आते हैं, कानून के तहत वो अंदर जाते हैं, कानून के तहत जितने भी रूल फॉलो वो करते हैं, वो बिल्कुल जो कानून में लिखा है वही वो करते हैं. और आप लोग या कोई भी ऐसा इंसान जाके एक पेटिशन लगा दे हाई कोर्ट में कि इतनी जल्दी उनको पैरोल, इतनी जल्दी कहते. देखिए, 4 साल में 7 बार उन्हें पैरोल मिली. आप बोल रहे हो 7 बार. एक दिन के लिए एक दिन आए, एक दिन के लिए वो भी आपने साथ में काउंट कर रखे हैं. और ये हर कैदी का, कोई भी कैदी हो देश में, हर कैदी का हक है कि उसको कुछ दिन के लिए फरलो पैरोल उन्हें दी जाती है और बिल्कुल रूल और रेगुलेशन से वो बाहर आ रहे हैं. और आपको बताएं कि वो एक राम रहीम जी कोई आम इंसान नहीं है. राम रहीम जी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं. ऐसे तकरीबन कल ही उन्होंने तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों के जो ब्लड डोनेट कराया है. कभी इतने पूरे भारतवर्ष में इतने पेड़ पौधे, इतने वृक्ष वो लगाते हैं, इतना सफाई का अभियान वो करते हैं. उनके जो एक देश के प्रति जो सहयोग है या देश के प्रति आप कुछ कहेंगे कि इतना योगदान है, उसको देखकर उन्हें उनके कोई भी जेल के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी उनमें नहीं देखी गई. कोई भी एक भी आज तक 4 साल के अंदर आपने कहीं भी ऐसा भाषण उनका कहीं नहीं सुना होगा कि जिससे कि कोई वो बिगड़े. तो वो सब कानून के तहत वो बाहर आए हैं. जी,
अच्छा, तो लोकेंद्र जी, आप इसेंशियली मुझे बोल रहे हैं कि राम रहीम इज़ अ ग्रेट पेट्रियट, बड़े देशभक्त हैं, वो तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और बहुत दान धर्म का काम करते हैं। तो इसेंशियली आप मुझे कह रहे हैं कि वो वीआईपी हैं, और तो क्या हुआ अगर वो वीआईपी हैं जिन्होंने 2 अपनी ही डिसाइपल्स का रेप किया हो और उसके लिए उनको कन्विक्ट किया हो, तो क्या हुआ? वो इतने सारे और भी तो काम करते हैं, इसलिए उनको बाहर आने देना चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट। डोंडियाल जी, मैंने वीआईपी मैं इसलिए बोल रही हूँ लोकेंद्र जी, आप सुनिए। लोकेंद्र जी, मैं वीआईपी इसलिए बोल रही हूँ, मैं वीआईपी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज कोर्ट ने भी बोला है, सुन लीजिए, आज कोर्ट ने भी बोला है, क्योंकि हरियाणा सरकार भी वही दलील देती है जो आप दे रहे हैं इस समय, लेकिन कोर्ट ने बोला है अच्छा अगर ऐसी बात है तो जरा हमें बता दीजिए कि कितने और लोगों को, खासकर कि जिन लोगों ने बहुत हीनियस क्राइम किया हो जैसे कि रेप, कितने ऐसे कैदियों को आपने पैरोल दी है? क्योंकि जब वो आंकड़ा आएगा तो साफ समझ में आएगा कि जो चल रहा है वो राम रहीम के लिए वीआईपी प्रिविलेज है। देखिए, आपके लिए वो भगवान हो सकते हैं, लेकिन देश के कानून के तहत और देश की कानून की आंखों में वो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। वो भगवान किसी के लिए, हमारे लिए भी भगवान नहीं है, आपके लिए भी नहीं, किसी के लिए भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान होते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा कि आप नर सेवा करिए, आप जो वैश्यावृत्ति में लिप्त इस देश में जो उन बेटियों को अपनाइए हैं, आप जो ये किन्नर है इनको एक समाज में जगह देंगे। इतने बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं, तकरीबन 130 काम भलाई के ऐसे हैं जो वो कर रहे हैं। उन कामों से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनके फॉलोवर हैं। उनके काम हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उनके फॉलोवर हैं। और ये कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी भी रूल को वो किया। हाँ, कोर्ट ने मांगा, वो उनके वकील हैं, वो जवाब दे देंगे, सरकार के वकील है, वो उनको बता देंगे कि इतने लोगों को छोड़ा गया। उन्होंने पूछा भी किस किस को भेजा, ऐसा तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया बाहर आके। आप देखिए कि इतना जो देश के अंदर अगर कोई इतनी बड़े नशा मुक्ति अभियान चलाए, सरकार नशा मुक्ति अभियान वो सफल नहीं हो पाते कि जहां जहां वो नशा मुक्ति, और तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोगों का उन्होंने नशा छुड़वा दिया। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ तो है। कासना जी, मानना तो आपको भी ये पड़ेगा ना कि वो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं। खैर, अरविंद कुमार जैन, यू आर अ फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश. Essentially what the Haryana government does over and over again is saying, why do you blame us every time Ram Rahim gets furlough or parole? It's the right of a convict. It is exactly the argument that I'm getting from Mr. Ram Rahim's supporter on the show, Mr. Kasna. My point to you, and I think the court has today also very categorically pointed out to it, that these rights and privileges, why is it that they are only extended to VVIP inmates, in this case Ram Rahim? Now you tell me, Mr. Jain, and tell our viewers, in your long service, what is your experience? Is the sort of parole being given to Ram Rahim normal for any normal regular prisoner as well? And heinous crimes mein, forget anything else, heinous crimes mein bhi kya is parole a right of a prisoner? Jail manual prescribes furlough and parole to prisoners. He is getting parole as per jail manual of Haryana. But there are gray areas. It is given, it is prevalent in all the states. It is given to political prisoners. It is given to VIP prisoners. And the same treatment is not meted out to other convicts. High Court is absolutely correct in its observation. They have passed an order. It should be respected that henceforth no parole shall be granted to Ram Rahim without our permission. So Haryana government will move a court for permission. But there is gray area. There is a lot of discretion. There is a lot of discretion in Haryana. Divisional commissioner is empowered. District magistrates, DCs are empowered to grant parole, and they are doing it. And you can always say that he's coming out, he's being given parole because of political reasons. So there are gray areas. He is getting parole as per law. But other convicts, I doubt whether they are also getting
parole who are Okay. accused of murder cases, rape cases. Yeah. Okay, okay, Ranjana Kumari, you're joining us on the broadcast as well. My point is this silsila of paroles and furloughs for Ram Rahim has been now ongoing for the last 4 years. In the last 4 years, he has walked in and out of jail at will. Will you say, as far as the Haryana, Punjab and Haryana courts decision/order is concerned today, it is Dera Durust? Is totally unfair and it is absolutely unacceptable that the government is using his presence as political. Certainly, this parole is totally political. If you remember, last time also it was before the election, local elections, and now it is for the national election. I don't think criminals, rapists deserve this kind of a treatment which he is getting. And also for a party which should be confident of its own work and also its own mobilization capacity should not use a rapist and a criminal as a vote catcher and try to and this all parole. Why have you ever heard of such criminals getting any parole like this so easily every time? And what does he do when he come out on the parole? Has anybody reviewed that? I don't think so. So I feel that this is very, very important to immediately cancel the parole, and also that next time they should be ensured that he doesn't get parole like this. And if court orders him the parole, is very different issue. But what is happening at the moment is totally political interference for getting him this kind of a parole. Ranjana Kumari, just to clarify one thing, the fact is that the court has not cancelled his parole. The court has said, all right, you have given him parole, let him be out till the date of the parole is over. And once the date is over, you put him right back in jail. And if you feel like giving him parole or furlough once again, then you cannot do it without our permission. Arvind Kumar Jain, can I quickly ask you then, is parole, especially for a high-profile convict like Ram Rahim, essentially a political decision? It's not like, that jailers or the district commissioner of the area will take a decision on someone like Ram Rahim. It's ultimately Chief Minister Khattar who will take a decision on Ram Rahim getting parole because he's a high-profile convict. You are correct. You are correct. It is implied that orders must be coming from above, and only then convict is being released. But it is part of the jail manual. I think it needs relook, this jail manual also, as to who will get the parole and for how long. There is a condition that he will not meet public during parole, and he's following it. He comes to Barnawa. It's in district Bagpat, and there is the ashram of Ram Rahim there. And as soon as he enters that ashram, gates are closed, and he doesn't seem to be meeting people. So the condition which is imposed is being followed by him. But why is he getting parole, and how many other convicts of rape cases and murder cases are getting? It is up to the High Court to summon the data and pass orders accordingly. We tried to get that data. We don't have it. Seems the High Court doesn't have it either, which is why they have asked the Haryana government to give them this data. Because what will this data tell them? This data will clearly show them whether special treatment has been reserved for Ram Rahim. And by every account, ladies and gentlemen, by every account, there is special treatment that is being given to Ram Rahim because he wields some political influence in a certain area that borders Punjab and Haryana. That is the only reason why he is being given this political patronage and VVIP privilege. If it was a regular rickshaw puller or a truck driver or a school teacher who was convicted of raping 2 women, do you think they would have been in a position to walk out so easily from jail at will? No, of course not. Of course not. All of us, Mr. Kasna, सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. ये कुछ हद तक एक बेशर्मी भी है हरियाणा गवर्नमेंट की कि किसानों के खिलाफ तो आप एनएसए भी लगा दें, किसानों के खिलाफ आप ये भी बोल दें हम इनके पासपोर्ट कैंसिल कर लेंगे, हम इनका वीजा भी कैंसिल कर लेंगे, लेकिन राम रहीम के लिए आपको जब बाहर जाना है केक काटने के लिए आप जा सकते हैं. बिल्कुल. और ये भी देश में ऐसे थोड़ी ना चलता है, लोकेंद्र जी.
Shreya, this is not true that he did not आप engage in मेरी any बात other activity. Last time we have seen in the first parole or second parole when he was in all his costumes and all that, and he was addressing his disciples. So it's not true that he's not meeting anybody. I don't think he just gets into his ashram. What does he do there? I mean, all his followers come there, and that is how he's. But I mean, leave everything aside. Why should he get so many paroles? How have the murder? He's not only rape convict, he's murder convict. And after his arrest, so many people died. So I don't think there is any reason a rapist should be given this kind of a parole. How many rapists really get these kind of paroles and furloughs? So why is he so special? Why Not is many. he so special for the Khattar government or Not for many, unless you're a anybody for that VVIP. matter? Why? Well, why VIP? I mean, like, so And treat you know, all that's the the all the point. rapists He's as not just VIP. So special. yeah. And while we may say this about the BJP and the Khattar government, the fact is that even opposition Congress MLAs line up to do pranam to him. Huh? So it is not just the BJP. It is the Congress as well, which is why Ram Rahim is not a political issue and his paroles are not a political issue in Haryana. Lokinder ji, boliye. जी आवाज़ नहीं आई आपकी। लोकेंद्र जी, मैं आपको लास्ट वर्ड दे रही हूँ, मेरा शो खत्म करने का टाइम हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, देश देख रहा है क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सब जानते हैं खट्टर गवर्नमेंट राम रहीम को क्यों परोल दे रही है बार बार, सब जानते हैं। आप कह रहे हैं रूल है, रूल है, रूल नहीं है। अगर रूल होता तो रूल सबके लिए होता, सेम होता। देखिए आप कह रहे हो, नहीं आप कह रहे हो कि सरकार उनके फेवर में काम कर रही है, सरकार उनको अपनी मर्जी से वो दे, नहीं, ये हर कैदी के जो सरकार ने, जो कोर्ट ने उनको अंदर किया है, वो सबको रूल रेगुलेशन के साथ वो आए हैं। और वो जो इतने जो भलाई के काम कर रहे हैं, इतना आप देखिए कोई नहीं कर रहा। आप देखिए ना, कल के दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने वहां पे ब्लड डोनेट किया है। मर्डर को 7 लाख से अधिक कल के डेट में वहां पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आप देखिए कासना जी, आरोप कोई किसी आरोप कोई किसी पे भी लगा सकता है, काम नहीं कह सकते ना। और कोर्ट में भी कोई भी जा सकता है। नहीं है ये आरोप नहीं है। देखिए कासना जी, ये आरोप नहीं है, ये तो कन्विक्टेड है ना, कन्विक्टेड ऑफ रेप एंड मर्डर है, ये आरोप नहीं है। मैम उन पे आरोप लगे हुए हैं। अभी अरे आप देखिए, निचली अदालत ने उनको सजा दी है और वो सजा को बिल्कुल जो रूल रेगुलेशन उसके तहत काट रहे हैं। उन पे कोई आरोप नहीं है। देखिए आरोप आप चले गए वहां पे हाई कोर्ट में, आपने लगा दी, भाई उनको क्यों मिल रही है, तो हाई कोर्ट को तो आपको जवाब देना ही है। तो आपको जवाब दिया कि भाई हम और भी जांच करते हैं, ठीक है करिए जांच। अगर उनको दोषी पाया जाता है तो फिर जो आप बोलोगे वो होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए देश में और काम हो रहे हैं, उन पे आप अपनी जो जनहित याचिका वहां लगाए। वो जितने भी निचली अदालत ने सीबीआई अदालत ने उनको दोषी पाया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत लंबे कोर्ट है। ऊपर की अदालत क्या बोल रही है? नहीं वो तो ठीक है, वो तो आप तारीख पे तारीख करते रहिए, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की अदालत ने कुछ नहीं बोला। ऊपर की अदालत ने बोला कि ठीक है, आप उनसे पूछा है। अरे भैया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऊपर की अदालत है ना। आपने और दिए, उनका भी डाटा उनकी सरकार दे देगी उनको। हाई कोर्ट ऊपर की अदालत है, मैं भी कह रहा हूं वो डेटा सामने आना चाहिए। आई एग्री विद मिस्टर कासना कि भाई ऐसे जैसे इनको दे रहे हो, ऐसे किस को दिया है वो ले आइए आप जी। हाँ, और वो ये भी कह रहे हैं अगली बार आपका मन करे वैलेंटाइन डे पे कि खट्टर सरकार जो है ना शो ऑफ लव राम रहीम को परोल देना चाहे, तो आप नहीं दे सकते। आप पहले हमारे पास आइए और हमसे परमिशन लीजिए। There's a reason why the court is saying it, because the court knows exactly what is happening. The court knows that this man is being given VVIP treatment by the Khattar government. चलिए ठीक है कासना जी, परमिशन तो अब लेनी पड़ेगी, अब तो नो चॉइस। वी लीव इट देयर फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जाके देखिए। चलिए नमस्कार। हाँ नमस्कार, देखेंगे। Ranjana Kumari, thank you very much, and Arvind Kumar Jain, thank you very much for joining us as well. Ladies and gentlemen, on that note, I'm slipping into a quick break on the show. Coming up next, I'm taking a look at why we are paying 1,40,000 rupees for a cataract surgery when its actual cost is just 14,000 rupees.
That's coming up next, and I'm telling you what the Supreme Court has said about it as well. Do stay with us.